Good evening, everyone. Armite College of Engineering Technology presents Alumni Success Story. We are on the second web series, and today we are live on Facebook because there is some Zoom settings issue of Zoom with YouTube. Hope everyone will see us live on our Facebook page. Friend, this is Armite's initiative of connecting mentors and mentees so that all the practical knowledge what our mentors, our alumni have, they are acting as mentors, and all the mentees currently studying students get the benefit of it. We are on day 4, and with us today we have Miss Priya Singh with us, who is going to talk about the topic kill with skill. Not losing our time, I would like to invite Abhinav sir to introduce today's guest, Miss Priya Singh. Thank you, Ram sir. Good evening, everyone. Let me introduce our one of the brightest alumni, Miss Priya Singh. She had completed her graduation from Armite in 2013. Priya is working to create an edtech to bring revolution in education sector. She started her professional journey as a web developer. Now she is a teacher, co-founder of Chandra Academy of Science and Engineering, co-founder of Vedya, an online education platform. She is also working as an artificial intelligence trainer at Whitecap Junior. Today, she is going to cover the topic Kill with Skill. Ma'am, please start. You can share your screen, Priya. Hello everyone. So today our webinar is about the topic Skill with Skill. Thank you Armite. Thank you Ram sir for giving me this opportunity to share my thoughts with junior students. So before we start with this webinar, I will like to refresh some of my memories from my college time. So here is some of the pics for my college life. College life. Yes, the life which I want again in my life, because of all these events which took place at that time. So as you can see, here are some of the pics from Tech Fiesta and some of the pics from the last day of our college. अगर मैं याद करूँ तो बहुत सारी मेमोरीज अभी भी उतनी ही रिफ्रेश जैसे कल ही हुई थी. टेक फेस्ट में काम करना, मैनेज करना, छोटी से छोटी चीजों से लेकर के हर एक एक्टिविटी कंडक्ट करना, वो सब काम हमने कॉलेज लाइफ में किया है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिली. जैसे मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट वर्ड, वो हमें क्या होता है सीखने मिला. नेक्स्ट, दिस आर द पिक्स फ्रॉम आवर आईबीज. द अपर वन इज अ पिक फ्रॉम बैंगलोर रूटी मैसूर आईबी एंड द लोअर वन इज फ्रॉम मनाली आईबी. तो हम लोगों ने पढ़ाई तो की है, साथ में कुछ मोमेंट्स को एंजॉय भी किया है, जैसे आईवीज हो गए. नेक्स्ट, सम ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम आर्माइट. Train journey for IB. Then lower you can see a convocation pic of mine, and the next one is a pic with my brother. Actually, he is also an Armite team. अगर मैं आपको रियलिटी बोलूँ तो मेरे लाइफ में आज भी आर्माइट उतना ही है. My husband is from Armite, my brother is from Armite. तो इनफैक्ट हमारे बीच में सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक आर्माइट ही होता है. तो ये सब चीजें थी हमारे आर्माइट की जर्नी. अगर मैं इनके बारे में बोलने जाऊं तो ये शायद आज 1-2 घंटे के शाम तक भी खत्म नहीं होंगे, इतनी सारी यादें हैं आर्माइट से. बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम जस्ट कटिंग इट ऑफ एंड स्टार्टिंग विद अवर टुडेज सेशन विद माय इंट्रोडक्शन. सो दिस इज मी, Priya Singh, and I'm a computer engineer from Armite. Right now I'm a teacher, a co-founder at Chandra Academy of Science and Engineering, a co-founder at Vedya, and also AI and machine learning trainer at Whitehall. This I have joined just now. I believe if we combine education and technology together, then we
creates success. So if you are ready to update yourself, then nothing can stop you in getting success. See, you might be crying here, sitting that in COVID-19, after that, what is going to happen? मैंने 4 साल पढ़ाई की है, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे, इतना मेहनत क्यों किया, अब तो जॉब भी नहीं है मार्केट में. तो ये सब नहीं है. जस्ट ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ. ये एक्चुअली अपडेट क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो पहला, जो आपका एक अजम्पशन है कि कोविड-19 के बाद आपके जॉब्स नहीं है. आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 के बाद मार्केट में कोई भी जॉब वैकेंसी नहीं होने वाली है. आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ये रियलिटी है, ये अजम्पशन है. अगर आप सोचोगे तो कोविड-19 के पहले भी कुछ लोगों के हिसाब से मार्केट में बहुत जॉब थे, एंड फॉर सम पीपल देयर वर नो जॉब्स एट ऑल इन द मार्केट. अब वो कौन से लोगों के लिए था? यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, स्किल था, जिन्हें काम करने के लिए अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, न्यू टेक्नोलॉजी सीखी, उनके पास जॉब था. और जिन्होंने नहीं सीखा, जिससे रोते रह गए, उनके पास कोई जॉब नहीं था. तो कोविड-19 के बाद भी हमारे पास जॉब्स है, पर उनके लिए जॉब्स है जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जो नए नए स्किल सीखेंगे, जो नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे. उनके पास जॉब है. जो सिर्फ बैठ के रोते रह जाएंगे या कंप्लेन करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनके पास कुछ भी नहीं है. You cannot just sit and complain कि ये नहीं है, वो नहीं है. You have to upgrade yourself to get it done. So ये important है. Then you have job vacancy. Now I'll say why you should trust me. So here are some new articles जो अभी current articles है, जहाँ पे आप देख सकते हो in COVID-19 times 2 lakh jobs opening are there from the big companies like Amazon, Google, बाइजू, फ्लिपकार्ट. ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने सिर्फ इतने लोगों ने इतने जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन किए. तो जस्ट इमेजिन करिए बाकी जगह पे कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे. अगर इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो फिर क्यों टेंशन है? जस्ट अपग्रेड योरसेल्फ एंड अप्लाई फॉर दिस. अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है. तो ये है फ्रेशर्स के लिए. आईटी फर्म्स अभी भी फ्रेशर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कौन से फ्रेशर्स? जिनके पास नॉलेज है. कोविड-19 से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमारी लाइफ स्टॉप सी हो गई, उसकी वजह से बाकी सारी चीजें भागने लगी हैं. तो कंपनी इज नॉट हैविंग टाइम टू हायर यू एंड गिव यू द ट्रेनिंग. अगर वो ट्रेनिंग लेके आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको आराम से जॉब मिलेगा. तो दैट प्री ट्रेनिंग इज द स्किल डेवलपमेंट. और वो कौन से स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे. यस, द मूवीज डायलॉग, ये तो हमारे फेवरेट होते हैं. मुझे ना मूवीज बहुत पसंद है और कुछ बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि उसमें से जो चीजें लेते हैं. 3 इडियट्स, ये तो हमारा इंजीनियर्स का नेशनल मूवी डिक्लेयर कर देना चाहिए ना. यहाँ इसमें एक लाइन था, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साले झक मार के पीछे आएगी. यस, कितना सही था ना. हम 4 साल, एक्चुअली 4 साल नहीं, टोटल 16 years ऑफ आवर एजुकेशनल करियर यही भागते रहते हैं कि हमें टॉप करना है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं, 95% चाहिए, 98% चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए. बाकी तो हम सीखना ही भूल जाते हैं. अब वो मार्क्स लाने के लिए क्या करेंगे? रट्टा मारेंगे, सिर्फ मगअप करके आएंगे, लास्ट मिनट पेपर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस पढ़ के आएंगे, पर उससे आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा. यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ. अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल आता है, फॉर एग्जाम्पल आईटी फील्ड में अगर आपका किसी भी
लैंग्वेज में इन डेप्थ नॉलेज है तो आपको जॉब मिलेगा। मार्क्स तो एक क्राइटेरिया है बड़े कंपनी में अप्लाई करने का। अगर सरवाइव करना है तो आपको नॉलेज चाहिए, दैट इज स्किल्स चाहिए। नाउ लेट अस टेक द अनदर मैसेज फ्रॉम अ मूवी, द मोर यू स्वेट एंड पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, अ डायलॉग फ्रॉम बॉर्डर मूवी। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अभी मेहनत कर लिए तो आपको जॉब करने के टाइम पे या फिर जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तब आपको कम रहेगा मेहनत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप को अभी अपग्रेड कर लिया तो आप उस टाइम पे नहीं रहोगे कि ये मुझे नहीं आता वो नहीं आता। उस टाइम पे आपको सारी चीजें आएंगी एंड you'll get success, you'll get promotions. तो ये होता है the more you sweat in peace, the less you bleed in war. नेक्स्ट मूवी डायलॉग इज, रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। या ये तो हम कुछ करते हैं, सुबह उठे कि चालू कंप्लेन करना, इसने हमारे साथ बुरा कर दिया, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया। ये इसने उसने कौन है? आई एम टॉकिंग अबाउट, यू माइट बी कंप्लेनिंग अबाउट योर स्कूल, योर कॉलेज, योर पेरेंट्स लाइक इन द वे पेरेंट्स ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल दिया, कॉलेज इन द सेंस कॉलेज ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। ये सब आप कंप्लेन्स कर रहे हो, जस्ट पुटिंग द ब्लेम्स ऑन देम। ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। आपको मैं एग्जांपल दूंगी मेरे का। आई वाज अ पास आउट स्टूडेंट इन 2000। उस टाइम पे जस्ट एंड्रॉइड फोन लॉन्च हुए थे, so we were not having any kind of Android phones, और इंटरनेट कनेक्शंस वो उस टाइम पे इतने भी ज्यादा हमारे ईज में नहीं थे, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज ये सारी चीजें नहीं सीख सकते थे ज्यादा। एंड अगर हमें कोई स्किल डेवलप करना है तो हमें मार्केट में जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता था। उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक लैंग्वेज के लिए ह्यूज अमाउंट लेते थे फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर जॉब्स, तो वो भी अफोर्डेबल नहीं था। हमने ये सारे प्रॉब्लम्स लेके सडनली एक दिन हमारे एचओ गए थाने ऑफिस अपने कॉलेज का, एंड वी मेट गुप्ता सर, ही इज अ ट्रस्टी ऑफ आवर कॉलेज। अगर कोई और ट्रस्टी होते ना किसी भी कॉलेज के तो मिलना छोड़ो, आप उनसे बात भी नहीं कर पाते, बट ही वाज देयर विद अस। वो हमें मिले, हमारे साथ पूरा टाइम बैठे, हमारे प्रॉब्लम्स को सुना ही नहीं, उसी टाइम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, सारे लेक्चर्स अरेंज किए, सारे प्रॉपर अरेंजमेंट की, एंड वी वर गिवन PHP कोर्स, PHP certification from the college at the minimal price of around 500 to 1000 rupees, और हमने PHP कोर्स पूरा कंप्लीट किया। तो हमें जरूरत थी, हम कॉलेज के पास गए। आप जाते ही नहीं हो, आप सिर्फ कॉलेज पे ब्लेम करते हो या कंप्लेन्स करते हो। You need to reach with your things to college. They are always ready to help you out. Actually, अगर आप एक बार भी जाओगे कॉलेज अथॉरिटी से मिलने के लिए रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स या करियर, they will be there to help you out. For example, आपने कॉलेज में IB अरेंज करने के लिए काम किया रहेगा, अपने कॉलेज में टेक फेस्टा के लिए काम किया रहेगा, आपने कॉलेज में कल्चरल फेस्ट के लिए भी बहुत काम किया रहेगा, पर शायद ही आप में से किसी ने TNP के लिए काम किया रहेगा, दैट इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो गो फॉर इट, अब जाओ, अपने आइडियाज लेके जाओ, प्रपोजल्स लेके जाओ। एवरीवन फ्रॉम कॉलेज इज रेडी टू हेल्प, तो स्टॉप ब्लेमिंग एवरीथिंग। रास्तों पे लोगों को जो आपको मिल रहे, जो आपको हेल्प कर सकते, उनको मत बुरा बोलो, नहीं तो आपको कभी सक्सेस लाइफ में मिलेगा ही नहीं। जस्ट ट्राई टू गेट एवरीथिंग whatever you are getting from everyone you are meeting in throughout your journey, then you'll actually succeed in your life. That has been taught by this one. So ये सारी चीजें लेके let us understand what is the actual expectation of a student and what actually is there in industry. अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं
तो आपको लगता है कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है वो इनफ है? यस, आई एम सेइंग करेक्ट, यू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आप लैब में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। वो आप कोड लिखते हो जो टीचर सिखा रही है एंड यू आर रनिंग टू गेट द आउटपुट, और वो आप इतना इंटरेस्टिंगली करते भी नहीं हो सीखने के लिए कि क्यों आ रहा है। सो दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। प्लस अगर आपने सोचा होगा कभी, तो आपका जो करंट सिलेबस है ये एक ओल्ड सिलेबस है। अगर एग्जांपल दूं आपको तो कोविड-19 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है आगे मार्केट में, तो when these technologies are coming, we're not going to change our syllabus right just now, just to make it a new latest technology oriented syllabus. तो जो आपने सीखा है वो ओल्ड सिलेबस है, और जो आप यूज करने वाले हैं वो आपका न्यू टेक्नोलॉजीज होने वाला है। नेक्स्ट यू हैव assumption that डिग्री नॉलेज इज इनफ फॉर जॉब। आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, आपने उसके सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए, तो आपको जॉब तो मिल ही जाने वाला है। नो, इट्स नॉट करेक्ट। आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, काम क्या करना है वो पता होना चाहिए, तब आपको जॉब मिलेगा। योर assumption that only marks is enough for the best career is absolutely wrong. And top of that, you have this unrealistic expectation कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो ही मैं काम करूंगा, तो नहीं करूंगा। मुझे तो अंबानी के कंपनी में एक हायर पोस्ट चाहिए तो ही मैं काम करूंगा, या टीसीएस चाहिए और एल से आईबीएम चाहिए तो ही मैं काम करूंगा। ये सब गलत एक्सपेक्टेशंस है। रीजन आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हैं वो ज्यादा सक्सेस लेते हैं। रीजन, छोटी कंपनी में हम ज्यादा चीजें सीखते हैं एंड देन वी स्विच टू गेट अ बिग सक्सेस, जो बड़े में पॉसिबल नहीं होता डायरेक्टली। तो जो भी आपका करियर स्टार्ट हो, छोटे कंपनी से स्टार्ट करो जहाँ पे आपको सीखने मिले। सीखना इज इम्पोर्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े कंपनी में जाओगे तो अभी अगर आपको मंथली 35,000 मिल रहा है तो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर 45,000 मिलेगा। ओके फाइन, लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में हो और आप सारी चीजें खुद करके सीख रहे हो, तो देयर इज अ चांसेस कि 1 या 2 साल के बाद आप इतना सीखो, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। आप कंपनी चालू कर दो, या तो एक बड़ी कंपनी में स्विच लेके पैकेज लो। तो लीव ऑल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। दिस इज व्हाट एक्चुअली द कंपनी नीड्स। इट नीड्स योर प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको काम कितना करने आता है, ऑन प्रोजेक्ट जो चीजें होने वाली है वो कितनी आती है, दैट इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इज, जो मार्केट में ट्रेंड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े चाहिए, वो पुराने जमाने वाले नहीं चाहिए ना, शशि कपूर वाले, लेटेस्ट वाले चाहिए आपको। जब कपड़े की चॉइस में लेटेस्ट चाहिए, तो जो इंसान आपको जॉब पे हायर कर रहा है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेगा आपसे? अगर उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट इंसान है और जो सिर्फ स्कॉलर है, गॉट 95% वो है, तो ऑब्वियसली आई गो फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर्सन, क्योंकि उसको मुझे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा क्या काम करना है, मेरे पैसे उसमें नहीं जाने वाले। He'll be live on the project from the day he's joining. So that is latest technology important. Next, skill set the latest technology is the most important one. For example, abhi right now 3D, that is artificial intelligence, virtual reality, इनका time चालू है. If you are not aware, right now in COVID-19, we are using them. For example, we are replacing nurses with the robots. तो जिन्होंने रोबोटिक सीखा है उनका गुण है। लेटेस्ट जूम बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट जो भी करंट सिचुएशन था उससे अडेप्ट किया। जियो मार्ट लॉन्च किया, करंट सिचुएशन से अडेप्ट करके लॉन्च किया, इज अर्निंग।
So that is the latest technology skill that is important to survive in industry. Next, the first few years you have to dedicate for learning. You have to dedicate in terms of time. Means you cannot say कि मैं 6 घंटा 7 घंटे या 8 घंटा काम करके निकल जाऊंगा. People are working 15-16 hours. तब जाके उनका उतना एक्सपर्टाइज होता है कि वो 1 या 2 साल के बाद एक बिग जंप लेते हैं in terms of money, in career, in everything. So that is important in the first few years. One of the survey told that 94% techies feel that there is a huge gap between academic knowledge and ground skill requirement जो भी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है उस पे. कुणाल नागरकट्टी, he is a CEO of Clover Infotech, इन्होंने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि जो करंट डिजिटाइजेशन हो रहा है, it is demanding us to get 360-degree development in terms of our skill. In addition to that, we also need technical skill, creativity, emotional intelligence, analytical abilities, then how to manage projects, how to talk with the people, how to manage people skill. Suppose you are running a project, so how to utilize different people's skill in that. All this is important. In fact, qualification is required to get into the profession. But you want to retain your profession and achieve a great success, then you need to develop, enhance, and practice your skills. Then only you'll get a survival in the industry. That is the fact. So here I have shown you a diagram which shows that for a successful career, we need technical strength, hard work, and soft skills. No one can teach you how to do hard work. It's you who have to do it. I can guide you with the technical terms and the soft skills. So today we are going to discuss about the technical strength and the soft skills. So let us start with the mechanical engineering. Mechanical engineers also needs to learn some of the softwares which they are going to use in the career. See, students, you might be having a mentality that mechanical students don't need to understand computers. It's nothing like that. Let me give an example. If I want to make a refrigerator, I need an electrical engineer, I need a mechanical engineer, and also software engineer. Why software? Because right nowadays there are some automatic refrigerators. तो उसके लिए तो सॉफ्टवेयर लगेगा ही. तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग नॉलेज को डालना पड़ेगा. तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी कंप्यूटर का नॉलेज उतना ही इम्पोर्टेंट है. और ये सारे जो मैंने रखे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं, AutoCAD, Pro E, Mechanic Calc, SolidWorks, MATLAB, Cassia, and Python. This is all the things which you can learn during COVID-19 when you are just ideal sitting at your home. Yes, most of the courses इसमें फ्री होते हैं जो मैंने आगे के स्लाइड्स में शेयर किए हैं कि आपको ये लिंक्स कहाँ पे मिल सकते हैं. तो ये सारे कोर्सेज आप करके अपने नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो कि जब COVID-19 खत्म होगा, यू विल बी एटलीस्ट 1 level ahead than anyone else. और आपका चांसेस ज्यादा रहेगा मार्केट सर्वाइव करने का. So this is for mechanical engineering. Next is about the civil engineer. So this is all the skills you need to enhance if you are in the field of civil engineering. Like you need to learn AutoCAD for designing, then Primera, and specifically I have written advanced Excel. Students, जब भी आप Excel पढ़ते हो तो आपको याद आता है कि मुझे तो रोज एंड कॉलम बनाना आता है, मुझे फॉर्मूलाज डालना आता है, मुझे कलर्स देना आता है. But that is the basic Excel which we have studied in school time. Now if we want to study in terms of engineering, you need advanced Excel, जिसका एक पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना रहता है. और ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो, वहां से कंप्लीट कर सकते हो.
ETABS, MS Project, and again FBA software. These are the softwares which you can learn if you are from civil engineering background. Let us take a look on EXTC engineering. For PCB design and layout tools such as OrCAD, Eagle and PCB, Eagle PCB are available. You can learn them. For circuit designing and EDA tools, you need to learn Proteus, TSpice, Dynity. So these are the softwares. And the same way, you can also learn some languages like C, C++, and MATLAB. Embedded system में जो इंडस्ट्री में required सॉफ्टवेयर होते हैं वो है Eclipse IDE, Code Composer Studio, MPLAB, IDE, and AVR Studio. तो ये exactly industry requirement softwares है EXTC branch. Before you join any company, आपको इसमें से एक चीज में तो परफेक्ट होना ही चाहिए. स्पेशलाइजेशन एक में तो करो. When you are taking 3 courses, you might not get the certificates, but you will get the knowledge, and that knowledge will lead to a successful career. So this is about EXTC. Since I am from computer background, I can give you a brief details about the computer engineering. So let's take a look on computer engineering demand. What is going to come in the future of computer engineering? So this is that machine learning and AI, artificial intelligence. So in future, we have a huge demand of machine learning and artificial intelligence. Artificial intelligence means you might have seen Alexa or iPhone Siri or Google Assistant. That is the basic example of artificial intelligence. And if I go on once, I'll say robots. So if I give an application, so now robots are used as nurses. 3D printing is used for printing the mask in China, so medical equipment. So all these are used, which is machine learning and artificial intelligence. So after lockdown, it is going to be a huge demand. One of the main reason is that let's take an example of hospitality, that is hotels. When you are going for holidays after COVID-19, one thing you'll take care about is that you don't want any human touch. So the big hotels need to arrange robots for that because that can avoid human touch. So they want robots over there to manage each and everything, like hospitality, taking things from one place to another. In fact, the companies will also hire robots for doing some stuff. So there is a big demand of machine learning and AI in future. Next, game development. So you might be one of the fan of games like PUBG and all. So game development is having a lots of scope in the future. You can create your own game, just put on the Play Store or App Store. You are not supposed to do anything else other than that. You are going to earn from them. So game development is a good field to understand. Next, application development, that is iOS, Android. See, right now, everything is going to be digital. So everyone needs an app to manage things, to inform others, and to talk with, or I can say discuss with the team members. So to reach the customers. For all this purpose, each and everyone is going to need their app. So if you are expert in it, forget about company job. You can just be a freelancer and just take the project, do on your own and deliver it to the client. You can earn in lakhs after doing one project. So application development is also a great field. And next one is digital marketing. You have already attended a webinar for digital marketing and influence marketing. So you are quite aware about it. So I'll give a short summary about digital marketing, why it is important. Actually,
in this time, we can reach our customer or we can reach anyone across the world just via digital things like Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter, or website. So digital marketing will get a boost, big boost after the COVID-19. So this is the current requirement of computer engineering. And this is the solution, one and only solution after COVID-19 to stay safe from COVID-19. So we can have virtual reality, cloud computing, 3D printing. You might have heard about all these things. So this is what you have to learn now to enhance your skill. This is the skill we were talking about. जब मैं बात कर रही हूँ स्किल की, तो आप ये मत सोचिए कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की थियरी पढ़नी है या फिर 3D प्रिंटिंग की थियरी पढ़नी है. आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है. थियरी पढ़ के अब मुझे कुछ नहीं आपको मिलेगा. यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये. The list of programming languages which you can learn now is Swift and Kotlin. Swift is used for iOS and Kotlin is for Android development. Listen, if I want you to learn any language, I'll suggest आप कोई तो ऐप बनाओ. ऐप बनाते बनाते वो लैंग्वेज को स्टडी करो. उससे क्या होगा, आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. क्योंकि इंडस्ट्री में आपको ऐप बनाना है, आपको 5-5 पेज का कोड लिख के नहीं देना है. यू हैव टू क्रिएट समथिंग. So start learning by creating things. As it was told in my introduction, I am a developer. I teach students who are from 6 years of age to around 18 years. तो 6 साल का बच्चा भी ऐप डेवलप करता है. So how we teach them? हम उन्हें ऐप बनाना सिखाते हैं, and side by side we teach them the language. That is how we create the apps and the programming concept clearance in them. So this is how you should do. अब सिर्फ स्विफ्ट लैंग्वेज लेके उसके कंसेप्ट पढ़ोगे या उसका कंसेप्ट कोडिंग सीखोगे तो नथिंग विल हैपन. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ऐप. So you can try that. That is my way of learning the languages. Next, I have given you the list of some technical skills you can acquire online. For example, artificial intelligence. See, for artificial intelligence, you might be aware about Python language. So you have to learn the Python. Then you can go for artificial intelligence because you need Python for that. So in Python, you can learn core Python, that is the basic concepts, then about the wave framework, and then analytical skills. So these are the things which you can learn if you want your career in AI, machine learning. And it is having a great demand, trust me. Next is data science. So what is this data science? See, actually right now in COVID-19, everything is going online. So there will be lots of data online or shared across the people. So just handling of data is data science, and understanding it. Understanding each and technicality related to data is data science. सेम वे अगर मैं बोलूँ साइबर सिक्योरिटी कहाँ यूज होगा, सब कुछ ऑनलाइन है. रोज तो न्यूज़पेपर में आप पढ़ ही रहोगे, जूम इज नॉट गुड, ये हो रहा है, वो हो रहा है. वो सब क्या है, साइबर सिक्योरिटी इशू है. जूम इतना पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अचानक गेनिंग मार्केट, गेनिंग पॉपुलर. So it is affecting market of Google and Google Meet, Microsoft Team, इसीलिए वो इतना गेन हो रहा है. ये साइबर सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, इनफैक्ट गूगल को चाहिए, फेसबुक को चाहिए. तो ये साइबर सिक्योरिटी का डिमांड आफ्टर दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ ह्यूज नंबर, क्योंकि जितना चीजें ऑनलाइन जाएंगी उतना सिक्योरिटी इशू होने वाला है. Now what is blockchain? आपने बिटकॉइंस के बारे में पढ़ा रहेगा.
ये जो क्रिप्टोग्राफी होती है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, जो हम लोग इनकोड करते हैं एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कोडेड लैंग्वेज से कन्वर्ट करके नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें होती है ब्लॉकचेन में। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। राइट नाउ आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम इंटरनेट से सारे चीजों को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हम लोगों ने ड्राइवरलेस कार्स बनाए हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होता, कार चलती है, तो उसे भी तो हमने जीपीएस कनेक्ट किया। वैसे मैकेनिकल डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारे जो चीजें होती हैं, इनको जब एक इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें तो होने वाली हैं आफ्टर कोविड-19, so you can think of this also. And the last but not the least, digital marketing. You need to explore this field. इसमें बहुत डिमांड है और बहुत ज्यादा चीजें हैं स्टडी करने के लिए, from Facebook marketing to Google Analytics, then Insta marketing, each and everything is there. डिजिटली आप कैसे प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, कैसे रीच बढ़ा सकते हो कस्टमर, all this you need to understand in digital marketing. I don't think कि आपका एम सिर्फ होगा जॉब लेना. Some of you are aiming for entrepreneurship after this. So for that, such kind of people try to cover one thing as a whole. For example, if you are learning Kotlin, complete it Kotlin, and then you can go for digital marketing too, so that you can develop your own projects and launch it. So it's not about that you should learn only one out of it. You have lots of time, and this time is not going to come again. So try to utilize as much as you can by learning as much as you can. So here are the next top soft skill which you need to understand. See, communication. It is very, very important. How you communicate with people. अगर आप बहुत चिड़चिड़ से बात करते हो या फिर आप अच्छे वे से रूडली बात करते हो, then it can create a problem. Similarly, self motivation. See, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए. अगर आपको ही खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे इंडस्ट्री में काम करोगे और दूसरों को भरोसा दिलाओगे? Yes, आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, ये भरोसा दिलाना है. Next is leadership. So leadership is like a quality which everyone should have exactly there. So next one is responsibility. You should be responsible for your activities, your tasks. Similarly, teamwork, problem solving, decisiveness, this all should be there. अगर प्रॉब्लम आया तो आपको उसको सॉल्व करने भी आना चाहिए, डिसीजन लेके उसे सॉल्व करना चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ काम करने आना चाहिए. ये सारे सॉफ्ट स्किल भी आपको अपने अंदर इंप्रूव करने पड़ेंगे. हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट. अगर कम टाइम है तो कैसे मैनेज करना, वो सारी चीजें भी सीखनी चाहिए. जैसा सिचुएशन आए वैसे आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वैसे आपको अडेप्ट करना चाहिए सिचुएशन को. एंड नेक्स्ट लास्ट इज नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज if you are in the field of marketing, you need to understand negotiation. कि आप कम से कम में बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी डील कैसे क्रैक कर सकते हो. So these are the some of the top 10 soft skill which you can do. So it's time for unlocking our brain in this lockdown. Here are some links of free online courses which I have already given to sir. He will share with you. And these are the top best internship sites in India which you can work on. So you can get an internship of your field and get ready to get inside in the market. See, if you are having internship, आप already एक step आगे हो, आपको practical knowledge काफी मिल चुका है जो काफी benefited होगा. So it's my suggestion that आपको एक internship complete कर लेनी चाहिए during this lockdown, and this website will help you with that. For MMS students, I can suggest you an idea. You can create some surveys
on the simple topics so that you get a live experience that how it can be created when you are creating it for some companies. आप कॉन्टेक्ट्स में शेयर करके वो यूज कर सकते हो. अगर आपने अच्छे से किया तो आप उसको अपने सीवी में भी डाल सकते हैं. एंड अगर अच्छे से नहीं हुआ स्टिल you'll get to learn a lot from it. So you can do that also. And these are the website जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्री में सीख सकते हैं. कोई भी लैंग्वेजेस हो यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होता है. You can learn and you can develop your own project depending upon the language of your choices. Thank you so much, sir. I'm done with this webinar. If you have any queries, please you can ask me. Thank you. Thank you, Ms. Priya, for taking this session. Thank you, sir. You have wonderfully explained what are the skills needed and what kind of additional softwares or services they should learn. So in each engineering you have specified for mechanical, computer, digital, all things. So we'll start with question answer thing. I'll first say, Abhinav sir, you are taking the first question. Yes, sir. Ma'am, I have a question. Nowadays, teaching is going online. So I want to ask, what are the advantages of online teaching over traditional teaching methods? See, in online teaching method, we can easily explain them by showing them simulation. अगर मैं एक ट्रेडिशनल मेथड से सिखाऊं तो मैं बच्चे को नहीं दिखा पाती कि 3D ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है. लेकिन जब मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ तो मैं उसको साइमुलेशन में सिखा सकती हूँ. आई बिलीव कि ट्रेडिशनल मेथड में ह्यूमन टच होता है, वो नीडेड है. पर राइट नाउ अगर हमारे पास उतने सिनारियोस नहीं है तो वी कैन गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग. इट इज very important to get it. Simulations, all that presentation, animations make us easier to understand the concept. Thank you. Thank you, sir. Abdur sir, you are taking second question. Yes, sir. First of all, I want to thank Priya for the wonderful session. It was really a very informative session, ma'am. I hope all the participants will be benefited from this session. So my question is, what are the best job skills one should mention in his resume? Job skills in the way, sir, if I am from IT field, I'll just put my job skills, which I know. Suppose I'm not aware about any skills, I will not put it. When I'm going for interview, the interviewer is going to ask me the question only related to the things I have mentioned in my resume. So I should be first confirm, means I should have a in-depth knowledge of each and every concept of that skill. Then I should put in my CV. Otherwise, I should not put it in my CV. For example, if I am a web developer, I'm expert in PHP or I'm expert in WordPress or Joomla, so I'll put that. I will not put OpenCart because I'm not aware about that. So just put which you are confirm about, you are confident about. Only put that things. In fact, in interview they ask questions, cross questions regarding your hobbies. So if you are writing, reading book is my hobby, they cross question. So which book is your favorite book? Who is the author? How was the story? So don't put anything in the resume which you are not confirmed about, which talent or skill is not present in you. Be truthful with your resume. Thank you, sir. I hope Okay. I could give the answer. Okay, thank you, ma'am. Okay, one question I Thank am taking, Priya ma'am. Yes, sir. What will guide to the engineers, fresh engineers? Should they go with their own startups or they should go for working? I'll suggest join small firms to get the knowledge from them how the functionality occurs. Side by side, improve your knowledge and start taking freelancing projects so that you can also work on that. And once you're set with your freelancing project, then you can take a decision on leaving the job and going for the entrepreneurship. Directly don't jump into the entrepreneurship because it will not give you anything.
You need to invest your money also. And for investment of money, you need to earn it. If you are earning it, you will respect. If you are taking it from your parents, it hardly matters even if you are losing it. So my suggestion, start from small firm. Don't dream or take a big firms for first job. Go for the smaller one and side by side start taking your freelancing projects, which are easily available from work from home, then freelancer.com. So all these sites are giving you the freelancing jobs. And the skills which you have shown today, many skills are that parallelly to your work, some work you can do from home also. Yeah, it's like that only. See, I am right now currently a co-founder of Chandra Academy, so I'm a teacher. Side by side, I handle the digital marketing and technical stuff of my class. Side by side, I'm also so I'm doing 2-3 things at a time. And now I'm going to launch my platform. So being an engineer is the best thing. I need to sort my time. Whatever times I'm having, I can use it. And it's not compulsion that you can be expertise in one thing only. Try to explore everything. Learn everything, whatever you can. Knowledge is never bad. Right. Abhinav sir, you are taking next. You can take next question. Yes, sir. You just talk about you are doing various things now, as working as a teacher also and training student for artificial intelligence. Yes. How do you manage your time with this? And can you give some tips about ability to work under pressure? You have mentioned that Yeah, one. sure, sir. Sure, sir. Actually, if you want to work, then time will never be a problem. If you want a fixed 8 to 7 job, then you cannot succeed. I want to explore myself. I want to achieve success. I can give as much time I have. See, I take lectures, my schedules are fixed for 1 week or 10 days in advance. So I know this duration is for this slot. I need to take the lecture of US, or I'm taking lecture for American students also. So US for Indian slots. Then this is lectures at my class. These are the work aligned. So if my work are aligned, I'll not go for my entertainment things. Means I will avoid them. I'll just complete my work first and then go for other things. Social life is fine, entertainment is fine, but right now this is the time to create my own career. I need to stand on my steps. I need to have a successful career, and for that I can dedicate my whole time for my career. So it's on you. If you have the dream and you want to complete it, 24 hours is there. You can use, I think, at least 18 hours, even if you are sleeping for 6 hours. You have the time. So it depends upon you and your thoughts. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very inspiring. Abdul sir, Yes, sir. more questions. The next question is asked by one of our participants. According to you, which is better area for internship for computer ID student? Right now, if you are interested and if you are good at marketing, you can go for digital marketing. If you are a hardcore coder, means you love coding, you can go for development, app development. And if you are creative with the thinking, so that this imagination can be creative, then go for AI. See, at the end, you are not a robot to do the things. You need to have the talent and the thought, the enjoyment in that. So if you are running just behind the money or career, it will not lead you to any place. So it's better understand your strength. If you're good at marketing, go for digital. And same way like for others. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Ms. Priya, you are founder of Chandra Academy. You are running your business. You are inspiring the women entrepreneurs, the girls, the studying. What message to the young engineering girls? Girls, actually, if I say about my experience, I was never having any issue being a girl. I had a wonderful family, and currently my in-laws' families are wonderful. They are fully supportive. In fact, in my class,
out of 18 teachers, only 3 are gents, and rest are women. So it's like women are running the institute. So girls, it's never a saying that girls cannot do this, or if they're in IT field or any other mechanical or civil or EHTC, they cannot work by staying late at office. It's a old theory. Go home, work on your computer. It's everything online. So you can achieve a great success by by being at your home. So there is no, I say there is nothing related to girl or for boy. It's equal for all. Right, right. Maybe a time can come that boys have to work at home and girls will be working at office. No issues with that also. Okay, so that was just joking. Okay, so from Armite, we always have respect for girls, and we do Matrudeva Bhava as the biggest event of our college, where I mean, mothers of all the students come, and we have this event. So, what your role and what your some words for it? Matrudeva Bhava. I remember each and every moment I have spent during my college life. So actually, my parents were more excited about it. My mom used to come to the college, and forget about my mom. My grandmom used to come to the college. Oh, We used to stay at Vashi. She used to come at college after traveling 2.5 hours just to attend the Matrudeva function, Deva Bhava function. So that was the importance of it, and it was to be beautiful. Even this year, we were invited for that, and I sorry I was not able to manage it. As I told you, I'm already packed for next 10 days. But I love to attend again and again. It's a day dedicated to mothers. It's a day when we can share our feelings to mothers. When mothers are on the stage giving us medal for our achievements. So that is celebrated very well on this platform. That is what the college has given me, the day with my mom. And I was lucky to get that from this. And my mom were luckiest because they got 8 years, 4 with me and 4 with my brother. So okay. they attended the 8 years of Matrudeva Bhava. Very nice. For the new viewers who are watching us on Facebook, for them, let me just tell you that this Matrudeva Bhava is the unique concept by Armite College, and one of its unique. I mean, nowhere in the world you will find this kind of concept being developed. So this is the initiative of Armite College, where students have their mothers along with them, and mother honor their children and award them with the achievements. So, Miss Priya, last question we'll have it since time is pressing. What are your message for Armite College, and what things you are ready to mentor the new students, currently studying students? Yeah, I'm always ready to give whatever I can to my college because the college has given me a lot. Whatever I am today is because of my college. If anyone give me any chance to return back to college life, I'll go without any giving a second thought. It gave me confidence to speak. I was the one. I remember Tech Fiesta first when we were organizing. I went to the classroom for the announcement, and when I went on the stage, I was not able to speak. And after 2 days, I did again and again. After few days, I gained so much of confidence that I was the one who used to announce the announcement from the server room. So at my college, I got the exposure to actual real life issues from my college. Like if I have need to travel this much. I used to travel 2.5 hours for one side, 5 hours of traveling. But that was fun because I was getting something from my college and the beautiful scenario, the teachers. I'm still in contact with my teachers. I meet them when they're coming. So that is the affinity towards my college, and I'm ready to do whatever it takes for my college. I can come there and guide my students if they need me in every terms. If they need me in terms of training, I can definitely help them with that also.
Thank you so much. Just also tell me about your academy, what all things you teach, so that everyone who is listening, they also come to know about your academy. Yeah, I'm a maths teacher. I take maths from school section to engineering section. I take math to M3 and M4 also for all branches. I take computer engineering subjects and diploma subjects and the languages like C, C++, Python, and right now I'm taking AI and machine learning as well. So these are my fields. Okay. Thank you so much. I just invite Abhinav sir to give the vote of thanks. Thank you, sir. Abhinav sir. Yes, sir. On the behalf of our Armite family, I want to thank you, Priya ma'am, for this excellent informative session. I am thankful to the management for providing this virtual platform for the benefit of students. I am also thankful to the Ram sir for handling all technical operations and Rashid Mullah sir for co-hosting this season. I am sure all the students have now clear idea about the skills required for better career opportunity. Thank you all. Thank you Thank so you much, once. sir, for giving me this platform. Thank you once again, Priya. Thank you, sir. So friends, we are done for the day 4 and hope everyone is enjoying. I can see a lot of comments today coming on Facebook since we were today on Facebook, and the real practical skills shared by Miss Priya. Now wait for tomorrow. We will have our alumni who is there from Canada, Mr. Nitan Joshi, and he is going to guide you about how the insight into the Canadian market. It's very interesting. So we'll virtually see Canada things. So see you tomorrow again at 5 p.m. Till then, thank you for watching and follow us on our Facebook page and our Instagram page. Thank you.